Despite the high quality of its diplomats, Pakistan's diplomacy has fallen on hard times. The country has long been in a state of crisis, and a troubled domestic front undermines foreign relations. This is not the only reason why Pakistan is struggling abroad. Foreign policy challenges have become too complex, and we are responding with poor policy choices because of internal weakness, skewed national priorities, personalized governance, and a lack of direction and a sense of purpose. Our politicians' fights are between themselves, and not for the country. Today's geopolitical environment is defined by shifting alliances, uneasy power balances, and overlapping coalitions among big powers under the umbrella of an unsteady world order led by the US and China. As the Ukraine war, and the world response to it, has shown, the fundamental principles of peace and security are changing, as is the concept of sovereignty witnessed in the tension over Taiwan. Not only has the configuration of big power relationships changed, there's also a recalibration of relations among major middle powers with ongoing realignment and de-alignment. The prospects of confrontation, conflict, competition and cooperation have all increased. Briefly, while there are challenges, there are also opportunities. As great powers compete for influence, countries will need choices, but not all of them will have them. It is thus the best of times for some, and the worst of times for others. Our diplomatic space is shrinking. The competition for influence is, of course, the ongoing one between the US and China. China is trying to take away US allies, and Washington those of China. China's mediation between Saudi Arabia and Iran has strengthened its footprint in the traditionally pro-West Middle East, while Japan has reconciled with South Korea and pulled it away from veering towards China. The Philippines, which was getting close to Beijing, has been weaned off that path by Washington, while the Prime Minister of Singapore, a US ally, has just visited China. Countries are not switching but multiplying loyalties. But Pakistan's foreign policy keeps beating to the rhythm of an extinct world. Our foreign relations have no doubt had great success stories. But there has been a visible decline from the successful diplomatic maneuvering of the past that had leveraged Pakistan's geopolitical position and defense capability to the country's advantage. Years of living dangerously has weakened Pakistan, which has come to depend on others. Its diplomacy has now been left to seek loans and bailouts. That is shrinking our diplomatic space. Pakistan is not isolated but is certainly stranded. It is no hakiki azadi, real freedom, when one is dependent but feigns dignity. Dignity is not the courage to abuse big powers but the ability to stand up to them. And that comes when one can stand on one's own feet. That is hakiki azadi. We ourselves, and not foreign powers, are the principal architects of our failure. We just allowed foreign powers to be part of our body politic, and be accessories to our failure. For Pakistan to become normal again is difficult but not impossible. In foreign policy, there are opportunities not seen since Pakistan's masterly opening to China in 1963. Two dominant stories today: China's outreach to Iran and Saudi Arabia, and America's Indo-Pacific strategy, provide such opportunities by making Pakistan relevant to both Beijing and Washington. Quarter gives China the potential to sidestep the US and its allied naval dominance across the Indo-Pacific. Besides, should Beijing's ties with Saudi Arabia and Iran expand, Pakistan, which enjoys good relations with both these countries, could become a bridge between China and the Middle East. Washington too needs to engage with Pakistan to ensure that the latter's strategic partnership with China and conflicted ties with India do not undermine its Indo-Pacific strategy. To develop relations with both China and the US, Pakistan's diplomacy needs to be flexible. China is a strategic partner but cannot be a substitute for other relations. The ties with China may be indispensable, but with America they are necessary. Pakistan also needs to review its ties with India. The old model has become unsustainable, supported neither by our own diminished national strength nor by our friends lured by the economic and strategic opportunities that India offers.
and it is no help to Kashmiris either. These opportunities can't be exploited without global engagement, internal strength and freedom from external dependence. That is the road to take. Big powers could then ill afford to lose Pakistan's friendship, and adversaries could not run the risk of inviting its enmity. The writer, a former ambassador, is adjunct professor Georgetown University and visiting senior research fellow National University of Singapore. Published in Dawn, April 9, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. अपने सिफारतकारों के आला मेयार के बावजूद पाकिस्तान की सिफारतकारी मुश्किल दौर से गुजरी है। मुल्क तवील अरसे से बहरान की हालत में है और एक परेशान कुन दाखिली महाज खारजा ताल्लुकात को कमजोर करता है। ये वाहिद वजह नहीं है कि पाकिस्तान बैरून मुल्क जिदोजहद कर रहा है। खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस बहुत पेचीदा हो चुके हैं और हम अंदरूनी कमजोरियों, नाकिस कौमी तरजीहात, ज़ाती तर्ज हुक्मरानी और समत और मकसद के फुकदान की वजह से नाकिस पॉलिसी इंतखाब के साथ जवाब दे रहे हैं। हमारे सियासतदानों की लड़ाइयाँ अपने दरमियान होती हैं, अपने लिए होती हैं, मुल्क के लिए नहीं। आज के जोग्राफियाई सियासी माहौल की तारीफ अमेरिका और चीन की क़यादत में गैर मुस्तहकम आलमी निज़ाम की छतरी तले बड़ी ताकतों के दरमियान बदलते हुए इत्तेहादों, गैर मुस्तहकम ताकतों के दरमियान इत्तेहादों की तब्दीली, गैर मुस्तहकम ताकतों के दरमियान इत्तेहाद ओहे से होती है। जैसा कि यूक्रेन की जंग और इस पर आलमी रद्द अमल ने जाहिर किया है कि अमन और सलामती के बुनियादी उसूल तब्दील हो रहे हैं, जैसा कि ताइवान पर कशीदगी में खुद मुख्तारी का तसव्वुर देखा गया है। न सिर्फ बड़ी ताकतों के ताल्लुकात की तश्कील तब्दील हुई है, बल्कि बड़ी दरमियानी ताकतों के दरमियान जारी दोबारा सफ़बंदी और सफ़बंदी के साथ ताल्लुकात की बहाली भी हुई है। महाज आलाई, तसादुम, मुसाबकत और ताउन के इम्कानात में इजाफा हुआ है। मुख्तसर तौर पर जहां चैलेंजेस हैं, वहीं मौक़े भी मौजूद हैं। चूंकि बड़ी ताकतें असर और रसूख के लिए मुकाबला करती हैं, मुमालिक को इंतखाब की ज़रूरत होगी, लेकिन इनमें से सभी के पास ये नहीं होंगे। इस तरह ये कुछ लोगों के लिए बेहतरीन वक्त है और दूसरों के लिए बदतरीन वक्त है। हमारी सिफारती गुंजाइश सुकर रही है। असर और रसूख के लिए मुकाबला यकीनन अमेरिका और चीन के दरमियान जारी है। चीन अमेरिका के इत्तेहादियों और वाशिंगटन को चीन से दूर करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चीन की सालसी ने रिवायती तौर पर मगरिब नवाज मशरिक वस्ता में अपने कदम मजबूत किए हैं, जबकि जापान ने जनूबी कोरिया के साथ मुसालहत की है और इसे चीन की तरफ माइल होने से रोक दिया है। फिलिपाइन, जो बीजिंग के करीब आ रहा था, को वाशिंगटन ने इस रास्ते से हटा दिया है, जबकि सिंगापुर के वजीर आज़म, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, ने हाल ही में चीन का दौरा किया। मुमालिक तब्दील नहीं हो रहे, बल्कि वफादारियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मदूम होती हुई दुनिया की धन पर धड़कती रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे खारजा ताल्लुकात में बड़ी कामयाबी की कहानियां हैं, लेकिन माजी की कामयाब सिफारती मुहिम जोई से वाज़े कमी आई है, जिसने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सियासी पोजीशन और दिफाई सलाहियत को मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। बरसों की खतरनाक जिंदगी ने पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है, जो दूसरों पर मुनहसर हो चुका है। इसकी सफारतकारी को अब कर्जों और बेल आउट हासिल करने पर छोड़ दिया गया है। इससे हमारी सिफारती गुंजाइश सुकर रही है। पाकिस्तान तन्हा नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर फंसा हुआ है। ये हकीकी आज़ादी नहीं है जब कोई मोहताज होता है, लेकिन वकार का झांसा देता है। वकार बड़ी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं, बल्कि उनके खिलाफ खड़े होने की सलाहियत है। और ये तब आता है जब कोई अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह है ये हकीकी आज़ादी। गैर मुल्की ताकतें नहीं, बल्कि हम खुद अपनी नाकामी के बुनियादी मेमार हैं। हमने सिर्फ गैर मुल्की ताकतों को हमारे जिस्म की सियासत का हिस्सा बनने और हमारी नाकामी के लवाजमात बनने की इजाज़त दी। पाकिस्तान का दोबारा नॉर्मल होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
खारजा पॉलिसी में ऐसे मौके नजर नहीं आते जब से पाकिस्तान ने 1963 में चीन के लिए कामयाबी हासिल की थी। आज की दो अहम कहानियां ईरान और सऊदी अरब तक चीन की रसाई और अमेरिका की बहरे हिंद व बहरुल काहिल की हिकमत अमली पाकिस्तान को बीजिंग और वाशिंगटन दोनों के लिए मौजू बनाकर ऐसे मौके फराहम करती है। गवादर चीन को बहरे हिंद और बहरुल काहिल में अमेरिका और उसके इत्तेहादी बहरी गलबे को नजरअंदाज करने की सलाहियत फराहम करता है। इसके अलावा अगर बीजिंग के सऊदी अरब और ईरान के साथ ताल्लुकात में तोसी होती है तो पाकिस्तान, जिसके इन दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन और मशरिक वस्ता के दरमियान एक पिल बन सकता है। वाशिंगटन को भी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि चीन के साथ इसकी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और भारत के साथ मुतज़ाद ताल्लुकात इसकी बहरे हिंद और बहरुल काहिल की हिकमत अमली को कमजोर न करे। चीन और अमेरिका दोनों के साथ ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी को लचकदार होने की जरूरत है। चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है लेकिन दूसरे ताल्लुकात का मुतबादिल नहीं बन सकता। चीन के साथ ताल्लुकात नागुज़ीर हो सकते हैं लेकिन अमेरिका के साथ वो जरूरी है। पाकिस्तान को भी भारत के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करने की जरूरत है। पुराना मॉडल नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है जिसे ना तो हमारी अपनी कमजोर कौमी ताकत और ना ही हमारे दोस्तों की हिमायत हासिल है जो भारत की जानिब से पेश करदा इक्तिसादी और तस्वीराती मौके से मुतासिर है, और उससे कश्मीरियों को भी कोई मदद नहीं मिलेगी। इन मौके से आलमी शमूलियत, दाखिली ताकत और बैरूनी इन्हिसार से आज़ादी के बगैर फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। ये रास्ता इख्तियार करने के लिए है। इस वक्त बड़ी ताकतें पाकिस्तान की दोस्ती खोने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और दुश्मन उसकी दुश्मनी को दावत देने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मज़मून निगार साबिक सफ़ीर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो हैं। अखज़ शुदा बतारीख 9 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.